Hello friends, as I promised in the previous video that I will be sharing a video on tenses itself. Today let's avail of this opportunity and discuss about the tenses. If you look at the board, I have written 6 different sentences, 6 sentences. Before we analyze the sentences, let me tell you one thing that when we study tense, we always study verb, nothing beyond that. This is something that we have to bear in mind, that tense is exclusively related to verb. Now, a verb can be in different forms. It can be in first form, it can be in second form, it can be in third form, or it can be in fourth form. Now, take an example of a verb. For example, the verb that I have used here is take. Take is first form, second form took, third form is taken, and the fourth form that's also known as ing form is taking. Look at these. I may be very much concise and precise in telling you this, that if you have first form of the verb, tense is present. If you have second form of the verb, tense is past. This is all about tenses. If I say tense ends here, it does end here. Now look at these sentences. You may ask me a question that what about these two forms of the verb? If I have made it clear that I have emphasized in such a way that it seems the last point, it seems the final point, if I have made it clear like this, that first form of the verb is present tense, second form of the verb is past tense, and there is nothing beyond that, there will be a question on your side that what about these two verbs? Let me tell you that these two verbs do not tell anything about the tense. They have no role in deciding the tense. These two have a role in deciding the tense. Now, if I ask you in the first sentence, you have used first form of the verb, I say tense is present. You have used second form of the verb here, tense is past. Now look at these two sentences, You have a verb phrase here. You have am taking, you have was taking. Then these two, you have taken, had taken. Now look at these. Ing form and the third form, they do not come directly, they do not come on their own. ये खुद ही नहीं आते हैं. They need some help. यहाँ पे इसकी help कौन करता है? That is am. यहाँ पे was, यहाँ पे थर्ड फॉर्म की हेल्प कौन करता है? दैट्स हैव. यहाँ पे इसकी हेल्प कौन करता है? दैट्स हैड. सो वी कैन से दैट ऑल दीज फोर वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. दे हेल्प ऑक्सिलरीज, दे हेल्प, दे आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज. That is a different thing. What is a primary auxiliary? What are modal auxiliaries? That is a different thing. But the point is that I have to talk about these verbs. I said that they have no role in deciding the tense. What they talk about, we will talk about that later on. There is a thing that if you have a sentence in which there is only one verb, that verb will decide whether the tense is present or past. That verb will be in first form or the second form. If it is in the first form, tense is present. If it is in the second form, tense is past. Now, if you have if you have two or more than two verbs in a sentence, just like you have two verbs here, the tense will be decided by the first one. Now, the first one is am, first one is was, first one is have, first one is had. They will decide the tense. First one may be in first form or the second form. If you look at this verb here, now here am will decide. Now what is am? Basically this is be, helping verb, is, am, are. First form,
was and were, second form. Now, first form will decide that the tense is present. I told you that if the verb is in the first form, tense is present. If the verb is in the first form, tense is present. If it is in second form, tense is past. Have is in first form, had is in second form. So here the tense is, in this sentence, tense is present, tense is past. Now what about these things? What about these things? They will not talk about tense, as I told you. They will talk about something that is known as aspect. English has two aspects. One, progressive, or what we call continuous. Continuous. Second, perfective, or in common terms we call it perfect. Progressive is always shown by ing form of the verb or the fourth form of the verb, and perfective is always shown by third form of the verb. If we apply these things to these sentences, first verb will talk about tense, second verb talk about aspect. Now this is present, tense is present because this is the first form. ये पहला फॉर्म है वर्ब का. अगर ये पहला फॉर्म है वर्ब का, टेंस आना चाहिए प्रेजेंट. यहाँ पे क्या है? इंग फॉर्म. इंग क्या है? एस्पेक्ट. कौन सा एस्पेक्ट? प्रोग्रेसिव. तो ये बनेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. नाउ दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. थर्ड फॉर्म से आपको लगेगा पता, ये परफेक्ट होना चाहिए. अगर ये परफेक्ट है, दिस इज एस्पेक्ट. पहला वाला क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा आपका टेंस. टेंस वर्ब कौन सा है? हैव है. ये वर्ब है हैव. वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट है और ये परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट. ये क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट. दिस इज अबाउट द टेंसेस कि कैसे हम देखते हैं कि टेंस कौन सा क्या है. मैं फिर से बोलूंगा, जब आप टेंस के बारे में बात करते हैं, डोंट गो इनटू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. Don't think whether it shows present, past or future. Don't think about these things. Concentrate on the verb. If you concentrate on the verb, that can be in first form or second form, or you can have a verb phrase. If you have a verb phrase, the tense will always be decided by the first verb. पहला verb जो आ रहा है वही decide करेगा. जिनको मैंने यहाँ पे एंसर किया है ऊपर से नीचे तक, they decide the verb. लेकिन जिनको आपने यहां से देखा, अंडरलाइन जिनको मैंने किया है इन चार सेंटेंसेस में, वो आपको या तो थर्ड फॉर्म में है या तो फोर्थ फॉर्म में है. और ये दोनों जो दिखाएंगे, मैंने फिर बोला, ये आपको एस्पेक्ट दिखाएंगे और ये दो दिखाएंगे, ये आपको टेंस दिखाएंगे. सो टेंस एंड एस्पेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स. टुगेदर दे डिसाइड whether you can say a tense is present, progressive, past, progressive, present, perfect, past, perfect. Now if I write a sentence like this, he has been working. He has been working here since February, since something. Now let's complete the sentence. He has been working here since August. He has been working here since August. This sentence has three verbs: has, been and working. If you look at, अगर मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे टेंस डिसाइड कौन करेगा? टेंस डिसाइड करेगा पहला वाला टेंस. जिससे मैंने आपको बोला पहला वाला टेंस डिसाइड करेगा. यहाँ पे वर्ब होता है या तो फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में. थर्ड फॉर्म में पॉसिबिलिटी नहीं है, इंग फॉर्म में भी पॉसिबिलिटी नहीं है. नाउ लुक एट दिस. हैज इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की पहली फॉर्म है. अगर आप बीन को देखेंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. यहां पे बी को मैंने दिखाया इज, एम, आर, वॉज, वर, और इसका थर्ड फॉर्म जो है दैट इज बिन. द थर्ड फॉर्म ऑफ बी इज बिन. नाउ यू हैव फोर्थ फॉर्म ऑफ, जिसको हम इंग फॉर्म बोलते हैं. सपोज इसको हम इंग फॉर्म ही बोलेंगे या फोर्थ फॉर्म ही बोलेंगे. थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो है, दे डिसाइड द एस्पेक्ट. ये एस्पेक्ट को डिसाइड करेंगे. थर्ड फॉर्म क्या डिसाइड करेगा? परफेक्ट. इसका मतलब है आप बोलेंगे यहां पे ये परफेक्ट है. इंग फॉर्म क्या डिसाइड करेगा? प्रोग्रेसिव, नहीं तो कॉन्टिन्यूस भी डिसाइड करेगा. और वर्ब का जो पहला फॉर्म है दैट इज प्रेजेंट. तो उस लिहाज से आप क्या बोलेंगे? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. दिस इज हाउ यू डिसाइड कि कैसे देखते हैं हम प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है.
You don't have to, I mean, wrestle so much with the structures. उसके साथ ज़्यादा आपको लड़ाई वगैरह नहीं करना है. Just look at the tense, look at the verb. The verb can be in these forms and see if the verb is alone. अगर verb अकेला है तो खुद हो सकता है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में. अगर उसके साथ है कुछ, अगर इंग फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है, ये मान लीजिए दैट दे नीड हेल्प. ये कमजोर फॉर्म्स हैं, वर्ब की कमजोर, ऐसे बोल सकते हैं दैट दीज आर नॉट वीक फॉर्म्स. हम वीक फॉर्म्स तो नहीं बोल सकते बिकॉज वीक फॉर्म्स कुछ अलग तस्वुर है, दैट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट. हम ये बोलेंगे थोड़े से कमजोर हैं एंड दे नीड सम हेल्प. जो इनकी हेल्प करेंगे दे आर हेल्पिंग वर्ब्स. दे डोंट नीड एनी हेल्पिंग वर्ब. इनको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है. फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है. थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है. और जो इनकी हेल्प करता है वो तो या तो बी होता है, जहां पे आपने देखा बी कैन बी इन दीज फॉर्म्स, नहीं तो हैव होता है. हैव कैन बी इन दीज फॉर्म्स. हैव, अगर इसका हम हैव का पहला फॉर्म देखेंगे, वो एक तो हैव ही है और हैज ही है, और इसका सेकंड फॉर्म जो है वो हैड है. So this have can be in the first form or it can be in the second form. If it is in the first form, tense is present. If it is in the second form, tense is past. ये दोनों क्या दिखाएंगे? Aspect. Aspect क्या है इनका? That is perfect. तो यहाँ पे अगर मैं किसी को बोलूँगा बेटा मुझे बताइए, और my friend tell me what is the tense. Tense is past here. What is the aspect? Aspect is perfect. Together they make past perfect. So यहाँ पे present perfect continuous. अगर मुझे इसको change करना होता है past perfect continuous में, so हैव चेंज होगा डायरेक्टली हैड में, बाकी तो यही रहेगा. और द सेंटेंस बनेगा आपका दैट विल बी ही हैड बीन वर्किंग हियर सिंस अगस्त. इसका ये मतलब होता है कि टेंस को अगर आपने देखना है तो आप वर्ब को ही देखेंगे, इजी बात है, और वर्ब के अलावा किसी और चीज को नहीं देखेंगे. जब मैंने बोला दैट फर्स्ट फॉर्म शोज, फर्स्ट फॉर्म इट रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म रेफर्स टू पास्ट टेंस. अगर आपको लगता है कि चार फॉर्म्स में से सिर्फ दो ही फॉर्म्स टेंस दिखाती हैं, दो ही फॉर्म्स टेंस दिखाती है, इसका यह मतलब होता है कि इन दो फॉर्म्स को हम एक और नाम भी देते हैं, वी कॉल देम टेंस वर्ब्स. अब आपके पास कितने वर्ब्स हैं जिन्होंने आपको टेंस दिखाया? दो. कितने टेंस दिखाए? दो. क्या क्या? प्रेजेंट एंड पास्ट. ग्रामेरियंस आर ऑफ द ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. There is a general consensus among the grammarians that there are only two tenses in English. English में दो ही tenses हैं, present and past, and they categorically say that there is no future tense in English because you don't have any form of verb that will show you future tense. कौन सा form of verb है चार में से जो आपको कोई future tense दिखा सकता है? कोई नहीं. जहां पर भी अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, जिनको मैं यहां पे बंद कर रहा हूं, एक कंपार्टमेंट बना रहा हूं, आप जरा देखिए ये सारे के सारे जो टेंस दिखा रहे हैं, टेक ने टेंस दिखाया, फर्स्ट फॉर्म टेंस प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म टेंस पास्ट, फर्स्ट फॉर्म टेंस प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म टेंस पास्ट, फर्स्ट फॉर्म टेंस प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म टेंस पास्ट. इसका ये मतलब होता है दो ही टेंस हैं जो दिखाते हैं, दो ही वर्ब्स हैं जो दिखाते हैं टेंस, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म. इसीलिए they say that there are only two tenses in English, present and past. There is no other tense in English. What is future then? Future क्या है? Future is time. You have, in English we say that you have two tenses, two aspects and three times. Three times: present time, past time, present time and future time. Tense is not directly time. Tense directly time नहीं है. It may refer to time, but you cannot say that tense is time. No. अगर tense को आप time बोलेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास दो ही tenses हैं और दो ही times होने चाहिए. No, that's not the case. The case is that you have two tenses, you have three times, and you have two aspects. Now, if you look at these two sentences, एक और बात आती है. If you look at these two sentences, इसको आपने तो बताया दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें भी एस्पेक्ट है, इसमें भी एस्पेक्ट है, इसमें भी एस्पेक्ट है, इसमें भी एस्पेक्ट है. इसका एस्पेक्ट जो है दैट इज परफेक्ट, इन दोनों का परफेक्ट है, और इन दोनों का जो है दैट्स कॉन्टिन्यूस. ये जो आपको दिखाएंगे ये टाइम दिखाएंगे, ये टेंस दिखाएंगे. ये दो जो हैं टेंस दिखाएंगे, ये दो भी टेंस दिखाएंगे, लेकिन ये क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे एस्पेक्ट. अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि इनका एस्पेक्ट क्या है, एस्पेक्ट वाइज ये क्या है। अगर आप इनको देंगे, मैंने बोला हाउ मेनी एस्पेक्ट्स डज इंग्लिश हैव, इट हैज 2 एस्पेक्ट्स। If the verb is in the inform, aspect is continuous or progressive. If the verb is in the third form, aspect is perfect or perfect. अब यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, I take coffee, इसमें न तो इंक फॉर्म है न तो थर्ड फॉर्म है, न इसमें ये प्रोग्रेसिव ये एस्पेक्ट है न इसमें ये एस्पेक्ट है। इसका मतलब है इसमें कोई एस्पेक्ट ऐसे है ही नहीं। जब इसमें कोई एस्पेक्ट है ही नहीं, जस्ट इसमें कोई एडिशन है ही नहीं, इसका मतलब है बेचारा सीधा साधा है। उस लिहाज से सीधे साधे को हम इंग्लिश में सिंपल ही बोलते हैं। जब आप इसको देखेंगे ये सिंपल ही है, लेकिन कौन सा सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है। इसको भी आपने सिंपल ही बोलना है, फिर इसमें भी इंक फॉर्म नहीं है, इसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं है, इसको भी सिंपल ही बोलेंगे आप, लेकिन कौन सा सिंपल बोलेंगे, पास्ट सिंपल। मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, those basic things that become a hiccup later on in order to understand tenses, वो सारी खत्म हो जाएंगी। Hope you understood this. Thank you very much.